Hello all, I welcome you to the ninth lecture of this casting process. My name is Divyanshu Pandey. I've done my master's from IIT Kanpur. I'm having 3 years of teaching experience and currently working under a Techie project as an assistant professor in Engineering College, Jhalawar. So before starting today's lecture, I would like to recap the things which we have covered till the 8th lecture. So till 8th lecture, we have covered the design part of gating element, design of riser, type of patterns, and type of type of allowances which we use in casting processes. So if you have not visited all previous 8 lectures, you have not seen those lectures, then I recommend you to watch all those lectures because all those lectures are very important if you are considering to write the GATE examination in 2022 or any other public sector examination. So in today's lecture, I'm going to start with the different kind of casting processes which we use in the industry. Okay. So first of all, I would like to classify the casting process. I think this slide I've discussed about this slide in previous lecture, but let me do this again. So we basically categorize the casting process in two categories: expandable and permanent mold. But in some books, you can see the third one, which is known as continuous casting. So let me explain each and every part. So first of all, what is expandable mold? So expandable mold, we use a pattern or mold for a single time. Like in sand mold, you create a mold for single time use only, and after getting that casting, the mold is destroyed, and for another casting, you uh, need to make that mold again. Okay. So expandable mold ऐसा mold होता है जिसमें जो आपका जो भी मोल्ड है वो एक ही टाइम पे यूज होता है, वो आपको मास प्रोडक्शन में या मल्टी टाइम यूज करने के लिए हेल्पफुल नहीं होगा. ओके. सो देर आर 5 टाइप्स इन एक्सपेंडेबल मोल्ड्स. द सैंड मोल्ड वी हैव ऑलरेडी सीन. जो सैंड मोल्ड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड व्हाई इट इज एक्सपेंडेबल वी ऑल नो, because we can use sand mold for single time use only. That's why it is known as expandable mold or temporary mold, temporary casting, because this can be used for single time. Same way, the cell molding also, it is for single time. In investment mold, we can use investment mold can be used for mass production. I will explain about this in further slides. And same as full molding and COT molding is known as expandable mold because these two are also used for single time only. Now let's discuss about the permanent molds. So in permanent molds, what happens? You can use that cavity for multiple times. You can use that mold for multiple time because it is made of permanent material, metallic object. These are basically made of metals. So in centrifugal, we use centrifugal force to drive the molten metal in the cavity. So we will explain each and every. I will explain each and every part of this casting method in upcoming slides. So in this slide, I want to convey from this slide, I want to convey the message that in expendable mold, only the mold can be used for single time, and permanent mold can be used for mass production and multiple time it can be used. And the continuous casting is different casting, which is basically used for प्रोडक्शन ऑफ एनी लॉन्ग बार. अगर कोई बड़ा बार आपको बनाना है, लार्ज ऑब्जेक्ट बनाना, कंटिन्यूअस बार अगर कोई बनाना है, यू वांट टू प्रोड्यूस अ कंटिन्यूअस बार ऑफ लॉन्ग लेंथ, लॉन्ग शीट बनानी है, देन वी यूज कंटिन्यूअस कास्टिंग. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद एक्सपेंडेबल मोल्ड्स. ओके. सो सबसे पहला जो हमने यहाँ पर लिया है एक्सपेंडेबल मोल्ड में, विच दैट इज नोन एज शेल मोल्ड कास्टिंग. So first of all, we will try to understand this casting by observing this diagram. So this is the first step. So in this mold casting, first of all, what we do, let's say you want to make this kind of dumbbell. Okay, so this dumbbell you want to cast, and I'm going to use shell mold casting for this dumbbell. So first of all, what I will do, I will make a pattern, and this blue part is a pattern. This part is a pattern, heated pattern. Now you will ask that why this pattern look like the half part of this dumbbell. Then I will explain this part later. So first of all, consider that we want to make this dumbbell, and for making this dumbbell, we made a pattern, metallic pattern, okay, of the half part of this डंबल. तो इस डंबल के हाफ पार्ट जैसा हमने एक पैटर्न बना लिया. ओके.
this part, why we make pattern like this, you all know pattern के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस करा है. तो इसके हाफ शेप जैसा हमने पैटर्न बना लिया. Now what we do, we just use sand with resin binders. हम sand use करते हैं and also we use resin binders. Basically we use phenolic resin in this. Okay. अब phenolic resin क्यों use करते हैं, I will tell you later. So हम क्या करते हैं, हमारे पास this metallic pattern भी है. We heat this metallic pattern up to 230 to 260 degrees Celsius, and then we keep this box upside down. ये जो box है, firstly we have fill this box with the sand and resin binder. और यहाँ पे जो बाइंडर है, यहाँ पर फिनोलिक रेजिन है, उसके बाद कुछ बाइंडर्स यूज होते हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे जब ये सॉलिडिफाई होगा आपका जो सैंड है. तो ओके, सो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कौन सा रेजिन यूज करते हैं, तो यू विल राइट फेनोलिक रेजिन यूज करते हैं. ठीक है. Then you will fill this box, and you will keep this heated pattern above this box, and after this you will keep this box upside down. आप इसको उल्टा करके रख दोगे बॉक्स को. Then what will happen? This sand and resin binder will come in contact with this heated pattern, and because of this heated pattern, ये जो pattern है इसका temperature जो है ज्यादा होगा, and because of that heat, this phenolic resin and silica, फिलोनिक रेजिन जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, एंड इट विल गेट अधेयर ओवर दिस पैटर्न सरफेस. इट विल गेट अधेयर, एंड वी लेफ्ट दिस अपसाइड डाउन बॉक्स फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक फ्यू सेकंड्स, 60 सेकंड, 50 सेकंड्स, एंड देन वी जस्ट कीप दिस बॉक्स लाइक दिस. हम जो ये उल्टा बॉक्स है उसको सीधा करके रख देते हैं. वी कीप दिस बॉक्स अगेन इन at the right position, and then we see some kind of shell structure over this pattern. And why this shell is created? Because the temperature of this pattern is high, and because of high temperature, this resin and all get stuck on the surface of this pattern. And depending on the dwell time, what is dwell time? जितने time के लिए for the time for which we kept this box upside down, that time is known as dwell time. तो जितना टाइम हमने दिया है यहाँ पे इस सैंड को सरफेस के ऊपर अधेयर होने के लिए, that time is known as dwell time. तो ड्वेल टाइम क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे. ओके, तो ड्वेल टाइम मींस ये जितने देर के लिए बॉक्स यहाँ पर है, बेसिकली ये फ्यू सेकंड्स के लिए होता है, 50 सेकंड, 60 सेकंड्स के लिए. एंड आफ्टर दिस यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. सम sands and all will get stuck over this pattern surface. Okay, this thing is known as shell. Now what we will do, we will heat this shell. We will heat the shell. Basically that part is known as baking. So oven use करेंगे यहाँ पे और इसको shell को हम heat करेंगे जिससे कि इसके अंदर कुछ strength आ जाए. Okay, ताकि ये molten metal को handle कर सके. After heating, we will remove this shell from the pattern portion. ये जो pattern है आपका, जो metallic pattern है, उसको अलग करेंगे from this shell. So you will get shell like this, and we will make two shell like this. And after that we will join this two shell by using a clamp. Okay, और इसको एक बॉक्स में रख के सराउंडिंग में हम पूरा सैंड वगैरह जो भी है वो भर देते हैं. ओके, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. वी मेक दिस शेल, एंड नाउ वी वांट टू मेक दिस डंबल. तो दूसरा पार्ट वाले भी शेल बनाना पड़ेगा. दूसरा शेल भी हमने ऐसे ही बना लिया, और नाउ दोनों को शेल को वी added both shell by using clamp. And then after we will pour molten metal from this side. Okay, and then after some time the molten metal will occupy this space. उसके बाद after solidification we will remove this shell by applying some kind of force by using hammer and all. So ये आपका shell जो है वो अलग हो जाएगा. Then you will get solidified you can say casting, and that will look like this dumbbell. Okay, now where do we use this kind of casting? Where do we use shell mold casting? So shell mold casting is basically used for making cylinder block, rocker arm, or wall plate of refrigerator. There is a limit of there is a weight limit for this shell casting, क्योंकि ये जो shell है ये बहुत ज्यादा weight नहीं bear कर सकता. तो देखा गया है कि 200 kg तक का casting बनाने के लिए ये enough होता है, but उसके बाद बनाने में दिक्कत आती है. अब यहाँ पर जो है we are using a solid metallic pattern here, and by using metallic pattern we are making a shell. ठीक है, अब आप कह सकते हो सर यहाँ तो एक permanent pattern यूज हो रहा है, metallic pattern, तो then why we are keeping this kind of casting method in expendable category. Okay,
So we are keeping this thing in expandable category because by using this solid heated pattern, we are making shell, and we are considering this shell as a mold. Okay, and after preparation of each casting, we are going to destroy this shell. That's why we kept this shell mold casting in expandable category. ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी. तो यहाँ पर अब जो है solid pattern is used for making shell. That's why the accuracy is well maintained in this kind of casting. So better dimensional accuracy यहाँ पे maintain हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल accuracy होती है यहाँ पे. Exactly यही वाला चीज होता है, इसके ऊपर ये surface adhere करके shell बन जाता है. Okay. So if you are comparing this kind of casting with sand casting, then in this shell mold casting you will get better surface finish. Okay, I think ये जो shell mold casting है आपको समझ में आ गया होगा. हमने कुछ क्वेश्चन भी ऐड करे हैं, जो कि हम धीरे धीरे जब ये सारा डिटेल हम पढ़ लेंगे, व्हाट इज सेल मॉडलिंग एंड अदर कास्टिंग, देन वी विल solve those previous year questions. Okay, now the second expandable casting is investment casting. Okay, so again we will understand this kind of casting by observing this diagram. So first of all, start with step number 1. So I am going to write number here. In this sequence you need to follow. So in first step, what we do, we use a die. Okay, we use a die, and by using die we make a pattern. We make a pattern, and that pattern is made of wax. So first of all, what we do, we make a die. पहले हम die बनाते हैं, metal में die बनाते हैं. Die क्या होता है basically? जो चीज आपको बनाना है ना, उसका negative image होता है आपके क्या बोलते हैं, किसी भी solid object पे. तो आपको कोई metal है, and let's say you want to make this kind of pen. Then you will create a cavity inside a metallic plate, and that cavity will be known as die. Okay, उसको आप बंद कर दोगे. अगर 2 प्लेट बनाया आपने, दोनों के अंदर इसके हिसाब से आपने उसके अंदर कैविटी बना दिया, and you close this 2 boxes. So इसको आप die बोलोगे. Okay, so by using this die, अब इस die जो मैंने यहाँ पे बनाया इस पेन के लिए, if I'm pouring molten wax inside it, then what will happen? After solidification you will get pen made of wax. तो wax का बना हुआ पेन आपको मिल जाएगा. So in the same way, first of all we decide which kind of casting we want to make, and for that casting we make a die, and by using that die we make a wax pattern. Wax pattern कैसे बनेगा? उस die के अंदर आप molten wax को pour कर दो, तो आपके पास wax pattern बन जाएगा. अब मान लो आपको this is your wax pattern, and this kind of object you want to create. Okay, basically this kind of project this kind of object you want to create. Okay, this is a kind of you can say a container kind of thing, a small container it is. So this thing you want to create. So for this you make a wax pattern by using die. So wax pattern आपने बना लिया. Now you want to make this kind of object in more than one numbers. Okay, so आप एक से ज्यादा नंबर में आप बनाना चाहते हैं. You want to make 8 such casting. So what we will do, you will make 8 such wax pattern. Wax के 8 pattern बनाओगे, and now I will join this 8 wax pattern with a single runner. Okay, I will join all this 8 pattern with single runner. Okay, so यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पोर्शन लगाया, जिससे कि इसको रनर पे आप ज्वाइन कर सको. तो दूसरे पार्ट में हमने क्या करा? फर्स्ट पार्ट में we make wax pattern, and second part में we assemble these all wax pattern with a single runner. And now I am going to prepare shell. अब shell बनाने जा रहा हूँ. जैसे आपने अभी shell casting पढ़ा था ना, उसमें shell था. shell क्यों बना रहे हैं? For pouring a molten metal. वो जो shell है वही molten metal को एक तरीके से होल्ड करेगा. आप कहोगे सर ऑलरेडी wax वहां पे फिल है, how you are going to fill molten metal inside? I will explain that part. ये जो D wax है ये उसी लिए है. So after making this assembly, I will put this whole assembly inside a box, and that box is totally filled with slurry. Okay, so ये जो box है ये आपके सिलिका फ्लोर, वाटर और बॉन्डिंग एजेंट से भरा होता है. इसी को एक साथ में स्लरी बोलते हैं. तो what is slurry for investment casting? For investment casting we use slurry, and in that slurry we have silica floor, okay, water, and bonding agent में आपका होता है ethyl silicate. Okay, so we pour all this assembly inside that. Okay, and again depending upon time the cell will be created. जो भी आपका ये स्लरी है उसके ऊपर अधेयर हो जाएगा आपके असेंबली के ऊपर. ओके, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा. नाउ व्हाट वी विल डू, जब ये शेल आपका बन जाएगा, नाउ वी विल हीट दिस शेल.
अब इस सेल को हम क्या करेंगे, इसको पहले तो उल्टा कर देंगे. We will keep this cell upside down, and after keeping this cell upside down, we will heat this. So after heating this cell, what will happen? Your molten wax will come outside. So आपका molten जो wax है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि wax का आपका melting point बहुत ही कम होता है. And this process is known as dewaxing. Okay, so after dewaxing, what will happen? You will get this kind of cavity inside your assembly. Okay, now your assembly is ready for casting. So okay, after that, after dewaxing, we will keep this assembly in upright position, and then we will pour molten metal by using this runner. Okay, we are pouring molten metal inside. Now this molten metal will cover all the cavities. All the cavity will be covered by this molten metal. This process is known as pouring. Okay, so first step, second is assembly, third is cell preparation, fourth is dewaxing, fifth one is pouring, molten metal pouring. And after solidification, what we will do, we will remove each and every component from the runner. Okay, so we have provided some extra structure here. That this structure is provided for joining this pattern with the assembly. So उस वो जो एक्सेस हमारे पास था, जो एक्सेस हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा था इसको ज्वाइन करने के लिए, वो एक्सेस मटेरियल यहाँ से काट कर हम इसको असेंबली से अलग कर देते हैं. सो बाय कटिंग दैट पोर्शन वी dismantle this thing, and we will get final object like this, final casting. So that's why I said that this investment casting can be used as mass production, because in a single time you are getting 8 casting product here, but in case of cell casting you are getting single component. Okay, so investment casting can be used as mass production. You need to remember this point. And why it can be used? Because we can join m number of patterns on a single runner. Okay, so now where do we use this casting? So we use this casting for making gas turbine blades, jet engine parts we make by this. Medical implants can be used because simple है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसका डाई बनाते हैं और उसके बाद वैक्स यूज करते हैं. दैट पार्ट इज इजी, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? फॉर मेकिंग दिस डाई वी नीड टू परफॉर्म मशीनिंग ऑपरेशन फॉर मेकिंग दिस डाई. और ये जो डाई है, दिस डाई शुड बी डायमेंशनली एक्यूरेट. ओके, after that only you will get a proper casting with proper dimensional accuracy. So that's why the cost of this investment casting is high as compared to shell casting और sand casting. तो इसका जो ये cost है ये basically इसीलिए costly होता है for making this sophisticated die. Okay, तो अब sophisticated die आपने बना लिया, ये इसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी भी अच्छी मेंटेन हो जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट डायमेंशनल एक्यूरेसी इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग जेट इंजन पार्ट्स आल्सो. मेडिकल इम्प्लांट्स, ऑर्नामेंट्स के लिए भी यूज होता है. जहाँ पे कॉम्प्लेक्स शेप है वहाँ पे हम उसका रेप्लिका बना लेते हैं डाई में. एंड देन आफ्टर वी बाय यूजिंग दिस पैटर्न कास्टिंग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वी कैन मेक दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्नामेंट्स आल्सो, जो ज्वेलरी वगैरह होती है. ओके, तो ये आपको एग्जांपल्स इसके थोड़े से एप्लीकेशन, जो मेजर एप्लीकेशन मैंने लिख दिया, इसको आपको याद रखना है. बिकॉज sometimes these kind of questions were asked in the previous year in a matching category. I will show those questions after covering this portion. Okay, and this can be used for mass production. I think investment casting is clear, so let's move further. Okay, now the third expandable casting is full molding or cavity less molding. Okay, so as name just suggests, here we are going to use a kind of pattern, okay, which covers the full mold. Okay, let's see what happens in full molding case. So first of all, the pattern of this full molding casting is made of plastic material, जिसका आपका vaporization temperature कम होता है या melting point भी कम होता है. So basically the pattern is made of polystyrene और फोम और पीवीसी, इन तीनों में से किसी एक का बना होता है. मोस्टली पॉलीस्टाइरीन यूज करते हैं, मोस्टली वी यूज पॉलीस्टाइरीन. ओके, सो पैटर्न इज मेड ऑफ पॉलीस्टाइरीन. ओके, एंड नाउ वी कोट दिस पैटर्न विथ स्लरी so that it will be able to hold molten metal inside. कुछ strength आ जाएगी इसके अंदर. That's why we add some slurry over this. Okay, slurry coating, सिलिका सैंड का जो को मिलाकर बाइंडिंग मटेरियल के साथ मिलाकर इसके ऊपर, जैसे पुराना आपने देखा था शेल में या फिर इन्वेस्टमेंट में, दैट काइंड ऑफ स्लरी वी यूज इन दिस कास्टिंग आल्सो. ओके,
Now what we will do, we will use this thing for making our casting. अब ये जो भी आपका सॉलिड है, अब देखिए दिस रेड पोर्शन इज योर पॉलीस्टाइरिन, and what I did, I just covered this the surface of this pattern with slurry, and after getting जब ये slurry आपका जो solidify हो जा रहा है, after getting solidified, I just kept this inside the box casting box के अंदर हमने रख दिया सिंपल. ओके, अब आप कहोगे कि why you are not removing this pattern, why you are not removing this solid polystyrene pattern. Without removing this pattern, you will not be able to pour molten metal inside, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं होगा. Okay, so you will say that you need to remove this polystyrene. After that only you can pour molten metal inside. Okay, आप यही कहोगे कि यहाँ पे solid already यहाँ पे put कर रखा है, तो molten metal कैसे आएगा? The thing is, the vaporization temperature of this polystyrene is very less. So what will happen, as you start pouring this molten metal from this pouring basin, जैसे ही आप यहाँ से pouring basin से molten metal यहाँ पे pour करना start करोगे, this pattern made of polystyrene will start vaporize. Okay, so vaporization will start in this cavity, not this cavity, in this pattern region. So vaporization will start, and vaporization and this pouring, this will happen simultaneously, because जब आपका molten metal यहाँ पर आएगा तभी वो heated molten metal जैसे ही contact में आएगा आपका pattern में, वैसे ही pattern जो है वो vapor में convert होने लगेगा. Okay, जैसे ही vapor में convert होने लगेगा because of high temperature, because the temperature of molten metal is so high. Okay, the molten metal temperature is so high that it will change this pattern into vapor. ओके, तो इसको वेपर में चेंज कर देगा. अब आपके जो भी यहाँ पे सैंड वगैरह जो आपने यूज किया उसमें इतनी परमेबिलिटी होती है कि आपका जो गैस है ये बाहर निकल जाता है. ओके, जो भी वेपर है वो बाहर निकल जाता है, एंड द एम्प्टी स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय योर मोल्टेन मेटल. तो आपका जो वेपर, अब जो भी आपका जो पैटर्न था, द पैटर्न वाज मेड ऑफ पॉलीस्टाइरिन, एंड दैट पॉलीस्टाइरिन कन्वर्टेड इनटू वेपर ड्यू टू heated molten metal, and after this you will get this empty space, and this empty space will be filled by molten metal, जो भी आपका molten metal होगा. तो ओके, तो ये चीज यहाँ पे मैंने लिख रखा है. ओके, यू कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग इफ यू थिंक दैट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, आई थिंक अगर आप इसको समझ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ेगी. एक दो लाइन भी अगर आप लिख लोगे कि फुल मोल्डिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज पॉलीस्टाइरिन पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है एक चीज इसमें. ओके, दूसरी चीज याद होनी चाहिए आपको कि इन दिस पैटर्न, जो पैटर्न है आपका सॉलिड पैटर्न, डायरेक्टली सॉलिड पैटर्न वी कीप इनसाइड द बॉक्स एंड वी डोंट रिमूव इट फ्रॉम द बॉक्स, and we start pouring molten metal inside this, and after getting in contact with the molten metal, your polystyrene pattern will get vaporized. Okay, and that empty space will be covered by this molten metal. So I think ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. ओके, अब ये चीज कहाँ यूज होता है? ये मोटर केसिंग वगैरह बनाने में, फिटिंग और लॉक कंपोनेंट्स वगैरह बनाने में फुल मोल्डिंग यूज में आता है. ठीक है, तो फुल मोल्डिंग क्या होता है आई थिंक आपको समझ में आ गया. टिल नाउ वी हैव कवर्ड शेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग, फुल मोल्डिंग. So let's start with CO2 molding now. So CO2 molding is also comes into the category of expandable mold, and this is basically a kind of sand molding. ये sand molding ही होता है, sand molding ही होता है, और थोड़ा सा इसमें हम चेंज करते हैं, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ. So in first paragraph I have added that the CO2 molding is essentially a sand molding process where sand mix does not contain any oil. अब पहले क्या होता था जब आप sand casting करते थे, in that you use some kind of resin, clay and bonding agent. But in this CO2 molding, what we do, we don't use clay or any kind of oil or water. Okay, instead we use a sand mix contains with 2 to 6% of sodium silicate solution. Sodium silicate. So this is the formula of sodium silicate. So we add 2 to 6% of sodium silicate inside the sand, and this sodium silicate helps this sand in binding purpose. Okay, how it is going to help, we will cover in this paragraph and this paragraph. Okay, so first of all you need to understand that how this CO2 molding is different than sand molding. So basically all things are similar.
we are going to use same kind of arrangement and all which we use in sand casting. बॉक्स यूज करते हैं, उसमें जो भी आप ऊपर वाला कोप होता है, नीचे वाला ड्रैग होता है, we use a kind of pattern and then we make a cavity, then we add the runner and all. So all those things are same. The thing which is different is we don't use any kind of binder, oil or water in the sand. Instead of that, we use sodium silicate solution, and that is of 2 to 6%. Okay. And now after adding this thing, what will happen? This thing we need to understand. So this sand mix has very high flowability. पहली तो ये property होती है. Okay. After mixing this silicate solution, your sand will have very good flowability. It will cover the all corners of your cavity. Oh, sorry, of your box. जो भी आपका बॉक्स है उसमें जब आप ये सैंड डालोगे तो हर कॉर्नर को वो कवर करेगा. Okay. And now there is a property of this silicate, sodium silicate. It reacts with CO2 and makes silica gel. So this react with CO2. Okay. So अब इसको थोड़ा सा बैलेंस आप लोग कर सकते हो. ओके, सो दिस रिएक्शन विल हैपन. और इस रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली हमको इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या याद रखना है कि दिस रिएक्शन विल गिव सिलिका जेल एज एन प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है कि दिस सिलिका सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन रिएक्ट्स विद CO2 एंड गिव अस सिलिका जेल. ओके, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी. यहाँ पे सिलिका जेल है, यही इंपॉर्टेंट चीज है. एंड सिलिका जेल वर्क्स एज बाइंडर because it has a very good bonding properties. The silica gel has very good bonding property, and this bind all your sand particles together, so it will have a good strength as compared to sand casting. तो sand casting के तुलना में इसके अंदर अच्छी strength होगी, because जो अब आप कहोगे कि सर how this silicate solution, sodium silicate solution is going to react with CO2, there should be some kind of arrangement. Yes, there is arrangement. So look at this diagram. Okay, so the box is filled with your sand along with sodium silicate solution. Okay, now this is the cavity. This is the cavity where you want to pour molten metal. Okay, now what we do, we use some kind of arrangement to pass CO2 gas inside this box. Okay, जो भी आपका ये molding box है, casting box है, इसके अंदर we have some kind of arrangement to pass CO2 gas, and when we pass CO2 gas, then this sodium silicate solution will react with CO2 gas, and it will be converted into silica gel, and that silica gel will combine with sand, and it will make a hard structure that will be and that structure will be able to hold a very heavy molten metal. Heavy molten metal अगर डालोगे, काफी weight में डालोगे, तो उसको भी वो handle करने की capacity उसके अंदर होगी. Okay, so what is happening here? You have sand along with sodium silicate solution. This is your cavity where you want to pour molten metal. So before pouring molten metal, we pass CO2 gas through this, and after passing CO2 gas, this combination of sand and all sodium silicate solution get converted into silica gel. Okay, and silica gel, since silica gel has good bonding properties, then this combination of sand and silica gel make a good structure that will be able to hold हैवी मोल्टन मेटल. जो भी आपका ज्यादा वेट में अगर मोल्टन मेटल जाता है उसको भी होल्ड करने की कैपेसिटी होगी उसके अंदर. एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन टूल बेड्स, engine block, gearbox housing, because these all components are very heavy. Okay, and for casting these all components, you should the mold should have strength to hold this amount of molten metal. Okay, तो इतना weight में hold करने के लिए capacity होनी चाहिए. और for that capacity we use CO2 molding because it provide good strength in your sand. Okay, mold sand के अंदर good strength देता है because of silica gel. Okay, so there is some optimal time for passing this CO2. So for a certain duration we pass this CO2, और अगर उस ड्यूरेशन से कम टाइम में हम कम टाइम के लिए CO2 अगर पास करेंगे, so reaction will not complete, and the whole sodium silicate will not get converted into silica gel, and it will not give proper strength to your sand. So for that only we there is a graph between strength and time.
So if we pass this CO2 gas, let's say for this T1 time, and T1 is an optimal time. Okay, अब इस T1 टाइम तक जो भी आपका जितना भी सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन है, all this sodium silicate solution will get converted into सिलिका जेल. तो एक ऑप्टिमल टाइम है, उससे कम टाइम के लिए CO2 नहीं पास करते हैं हम, उससे ज्यादा ही पास करते हैं. दिस ऑप्टिमल टाइम इज इन सेकंड्स ओनली, नॉट मोर देन 50 और 60 सेकंड. तो कुछ सेकंड्स के लिए ही होता है, उतने सेकंड में ही आपका जो ये सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन है वो सिलिका जेल पे कन्वर्ट हो जाता है. तो आई थिंक आपको CO2 मोल्डिंग भी समझ में आ गया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, so till now we have covered the expendable casting, four types of expendable casting. The first one was cell mold casting, हमने देखा. Second one was investment casting. Third one was full molding. Fourth one was CO2 molding. Now we are going to start with permanent mold. Okay, so what is permanent mold? In permanent mold, the mold is used for mass production. After making a single cast, it can also be used for making another cast. Okay, जैसे कि हमारा सैंड कास्टिंग में ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा वो जो भी आपका मोल्ड है उसको तोड़ना पड़ता है आफ्टर फॉर रिमूविंग योर component. But in case of permanent mold, you can remove that component after casting, and again the same mold can be used for further casting purpose. Okay, so first example I have taken here, first variant I have taken here of permanent mold is centrifugal casting. Okay, तो name suggest centrifugal casting कहाँ, जहाँ पे centrifugal force का कुछ रोल हो. Okay, so this process where mold is rotated. अब centrifugal force कब आएगा? When your mold is rotating. Okay, so in this process we rotate your mold, and because of that rotation, centrifugal force comes into the picture, and because of that centrifugal force, your molten metal will go towards the periphery of your mold. जो भी आपका cavity है उसके periphery की ओर जाके वो इकट्ठा हो जाएगा because of centrifugal casting, and in this way this casting happens. तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, because of centrifugal force, continuous pressure will be acting on the metal as it solidifies. And in which direction that pressure will act? So let's say this is your no. Okay, let's say this is your cavity, and you are pouring molten metal inside it. And this thing is rotating like this. ये ऐसे rotate हो रहा है about its axis. Then what will happen? Let me use a different color. Let's say blue color, and this blue color is of molten metal. So molten metal will get there over the periphery. Okay, why it will get there over the periphery? Because of this centrifugal force. Centrifugal force किधर लगता है? Centrifugal force will act, जो भी आप radially outwards लगेगा. The centrifugal force works radially outward. Okay, if you are rotating a mass, by holding a mass, if you are rotating like this, the centrifugal force will act radially outward. Okay, so because of this centrifugal force only, your molten metal will feel a kind of pressure towards the periphery region, और to radially outward direction में एक pressure feel होगा. Okay, and because of that the molten metal, the heavy molten metal will get there over the periphery. And now what will happen to the inclusions? Because the weight of inclusions are less as compared to molten metal, so inclusion का weight यहाँ पे कम होता है. So inclusions will not be able to move towards the periphery because of its less weight. Because formula जो होता है आपका mb square r या फिर mr omega square. So this is your centrifugal force formula. So if mass is less, it means centrifugal force will be less, and because of less centrifugal force, जो आपका inclusions वगैरह होता है वो center में ही रह जाता है, और जो आपका solid metallic part है, जो molten metal है, it will get stuck over the periphery. And because of this only, you can easily remove this slug and oxide. Okay, आपको जो impurities हैं वो आपके molten metal के साथ casting में नहीं जा पाती हैं. Okay, so this is a very good advantage of this centrifugal casting. Because of this only, centrifugal force only, your inclusions and all slag oxides get separated automatically. Okay, from molten metal. Now we categorize this centrifugal casting into three categories: true centrifugal casting,
semi-centrifugal casting, and centrifuging casting. Centrifuging casting. So one by one, we will see all these three kind of casting. So let's begin with true centrifugal casting. Okay. So I will try to explain this kind of casting by this diagram. तो पहले आप सबसे पहले ये diagram को ध्यान से देखिए. Okay, so this is the diagram, and let's say you want to first of all, which kind of material we can, which kind of component we can make made by this true casting. पहले हमें ये समझना होगा. After that, you can only understand this diagram. So we can only make hollow cylindrical pipes जो symmetrical हो, gun barrels and cylinder liners, यही सब बना सकें. तो इसमें हम वही component बना सकते हैं जो कि axis symmetric हो. अपने axis के about जो symmetric होते हैं, we can only cast component with the help of true centrifugal casting if it is axis symmetric. Okay. So you can make a pipe. You can also make a pipe because pipe is axis symmetric. So let's say we want to make a pipe like this. Okay, so hollow cylindrical pipe is this, and this is symmetric about its axis. So yes, we can cast this kind of thing by using true centrifugal casting because it is axis symmetric and hollow. Okay, so now what I will do, I will make a cavity of same diameter of this जो भी इसका outer dia है उसके हिसाब से हम बना देंगे यहाँ पर cavity. Okay, and now we will make an arrangement. We will make an arrangement so that we can rotate this cavity about its axis. जो भी आपका ये cavity है उसको आप इसके axis के about rotate कर सके. This kind of arrangement we need to make. Okay, for successfully cast this pipe according to true centrifugal casting. Now we use some kind of pouring basin. Pouring basin नहीं, basically एक तरीके से ये रिजर्वायर होता है आपका molten metal का, जिसमें आपको molten metal होता है. This is not a pouring basin. Remember, this is not a pouring basin. This is an external source for providing molten metal inside the cavity. Okay, ये pouring basin बिल्कुल नहीं है. Okay, तो we use this feeder. इसको feeder ही आप बोलते हैं. तो molten metal feeder के through यहाँ पर अंदर आएगा. Okay, now this casting is this cavity is rotating. Okay, this cavity is continuously rotating. So as this molten metal get inside this cavity, because of this centrifugal force, it will go towards the periphery. और ये आपका periphery में जो ये region है, यहाँ पर जाके ये चिपकता चला जाएगा. Okay, and this thickness of this cylinder will be decided by the amount of molten metal you have poured. तो amount of molten metal जितना आपने pour किया है उसी के हिसाब से thickness यहाँ पे decide होगी. अगर ज्यादा molten metal pour करोगे तो ज्यादा thick हो जाएगा. Okay, so thickness will be decided by the amount you are pouring inside this cavity. ठीक है. So in this way, this true centrifugal casting works. So अगर आपसे पूछा जाए भाई true centrifugal casting क्या होता है, so first of all you need to say that true centrifugal casting is used for cast an axis symmetric object. Okay, only axis symmetric object can be cast by using this what do you say, true centrifugal casting. Like your cylinder हो गया, आपका pipes हो गया, gun barrels भी symmetric होते हैं, cylinder liners जो cylinder के नीचे line होता है आपके cylinder में, that is also symmetric, axis symmetric. So all these axis symmetric kind of object can be cast by using true centrifugal casting. Second major important thing in this true centrifugal casting is its casting yield is 100%. Okay, if you remember, I've told you that casting yield is nothing but the ratio of volume of the cast upon जो भी आपका वॉल्यूम कास्ट है बट वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट, ये होता है आपका कास्टिंग यील्ड. अब यहाँ पे जो गेटिंग एलिमेंट है ये 0 है. देयर इज नो गेटिंग एलिमेंट इज यूज्ड इन दिस ट्रू सेंट्रिफुगल कास्टिंग. वी आर डायरेक्टली pouring this molten metal by using this feeder, and I told you this is not your pouring basin. This is just a feeder, okay, used for pouring molten metal inside this cavity. So it means there is no getting element, there is no volume occupied in getting element. So that's why the casting yield is 100%. Okay. So if somebody asks you, or if question is being asked in your examination that which is the process, which is the casting process in which we can obtain 100% casting yield, then your answer should be true centrifugal casting. ठीक है.
and again the accuracy and surface finish is very high. Now some other things you need to know about this centrifugal casting is what, when we use centrifugal casting, the force works, the pressure works in the direction, in the radial direction. Okay, so what happens here, your grain structure is denser towards your grains and all get denser towards the periphery. ओके, जो आपका ग्रेन्स वगैरह है वो पेरीफेरी के जो साइड में जो जैसे आप पेरीफेरी के डायरेक्शन में चलोगे वहां पे डेंस होता चला जाएगा, होता चला जाएगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, सो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेंसर मेटल, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि डेंसर मेटल आपका पेरीफेरी में चला जाता था और लाइटर इम्प्योरिटी कलेक्ट टुवर्ड द सेंटर. The thing which I am saying that about, saying about the grain structure. So now if a question is asked that which kind of grain you can get in centrifugal casting toward the periphery, what would be your answer? So think about it. I am going to tell you the answer. So the question is, which kind of grain will be obtained near the periphery of any centrifugal casting? Okay. So I think in 8th lecture or 7th lecture, I've told you about the concept of grains. Okay, how the shape of grains, how you can know, how you can conclude that which kind of grain will occur along the face of casting and in between the casting. I've told this thing in previous lecture. I think 7वें 8वें lecture में मैंने बताया था, तो एक बार और मैं repeat करता हूँ. So after pouring molten metal inside this cavity, what will happen? The centrifugal force will act and your molten metal will move towards the periphery. Okay. Now periphery में जो molten metal है वो directly किसके contact में आ रहा है? The periphery में the molten metal is coming contact with your this जो भी cavity है जिस material का ये बना उसके contact में आ रहा है. It means the heat transfer will be high at periphery. जो heat transfer है वो high होगा periphery पे. And again the force is also acting in radial direction. So what will happen if this is your cast? So in periphery region you will get small grains, fine grains, you will get densely fine grains. Okay, I think I have added this thing in slide. Okay, so I think this thing I have added this slide, it will be in the next slide. Let me check. Centrifugal casting job more complicated. Give me a second. Okay, I think I have not mentioned this thing, so you need to write this thing because this is important question, and this question was asked in GATE exam. ये पूछा गया था GATE में. So you need to write. Okay, what you need to write? You need to write that the grain structure near the periphery is fine and dense. So periphery पे आपका जो भी है grain वगैरह होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Let me write one statement here. I think ये वाला portion visible होगा. So let me write one. I've written this thing. Due to centrifugal force, high cooling rate, due to centrifugal force and high cooling rate, fine and highly dense grain structure can be obtained. I've written this thing. So let me write another para here. Show the grain structure near the periphery is fine and highly dense. ठीक है. सो जो ग्रेन स्ट्रक्चर होगा नियर पेरीफेरी ये फाइन और हाईली डेंस होगा. यहाँ पे मैंने ये चीज लिखा भी है और ये क्वेश्चन आपके गेट में पूछा जा चुका है. अभी जब ये सारी चीजें कवर होगी, आई हैव एडेड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू विल सी दिस क्वेश्चन देयर. Okay, not only in GATE, this question was asked in other examination also, public sector examination also. Because in public sector examination, what happens? They repeat the previous year questions from GATE as with same data. Everything will be same. और वो चीज वहाँ पे repeat हो जाती है. You will see few questions there.
ओके, सो बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं आपके पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स में। ओके, तो ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था कि भाई जो पेरीफेरी में है उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। सो योर आंसर वुड बी द ग्रेन स्ट्रक्चर विल बी फाइन एंड हाईली डेंस। Okay, and which kind of component can be produced by using true centrifugal casting? You can produce only axisymmetrical component. Okay, and this is used for mass production. Now I'm discussing about permanent casting, and permanent mold basically. This is permanent mold. You should write this. This is a variant of permanent mold. ठीक है, तो ये थोड़ा सा पीपीटी आई विल करेक्ट दिस। जब आप पूरा ये सब खत्म हो जाएगा कास्टिंग तो आपको ये नोट्स वगैरह सारे मिलेंगे। So in that you will get the right one, permanent mold. Okay. So application part is also clear. Hollow cylindrical pipes, gun barrels, and cylindrical liners because cylinder liners because all these are axisymmetric component. Now the second kind of centrifugal casting, which is known as semi-centrifugal casting. Okay. So this is also used for axisymmetric object. Okay, but a little complex one. Okay, so see. So यहाँ पर क्या है? This is your cavity. This black part it is your cavity. Okay, and you want to make a rim like this. You want to make a rim like this. So होता क्या है कि your molten metal will enter through this porine basin by means of gravity force, and it forced away by means of centrifugal force in this direction. Okay, in radial direction. ये radial direction में force होगा क्योंकि about this axis you are rotating this whole arrangement. Okay, so liquid metal जो है पहले कहाँ solidify होगा? Liquid metal first get solidify near the outer surface, तो यहाँ पे पहले solidify होगा, यहाँ पे पहले solidify होगा. Okay, and then the solidification direction will move towards the center. Okay, so progressive solidification will start from the end of the surface, from the outside surface, and it will move towards the center. तो सबसे पहले solidification आपका end point पे होता है. Okay, so where do we use semi-centrifugal casting? Semi-centrifugal casting is used for jobs which are more complicated than those possible in true casting. In true casting, we can only make axisymmetric object like this. Okay, you can make pipes and all. In this, you want to make a rim like this. Okay, there is a gap here. Then again, rim में क्या होता है? Spokes होते हैं, ठीक है? So this is also axisymmetric, but this is complicated. Okay, so in true centrifugal casting आप hollow structure बना सकते हो, but यहाँ पर hollow भी है और यहाँ पर कुछ filled material भी है. So this thing cannot be cast by using true centrifugal casting. So we use semi-centrifugal casting. अब उसके लिए क्या करते हैं? सुनिए यहाँ पे ध्यान से देखिए. So this is your cavity. We pour molten metal inside, and for making such kind of rim, we use projection like this. ऐसा projection use करते हैं हम. Okay, so we will use some kind of projection. We will make your cavity like this, and this is solid region. So molten metal will not get inside this region. Molten metal केवल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. Okay, this solid region को नहीं cover करेगा वो. So you will make a negative projection first of the product which you want to make, and after making your projection, okay, after making that projection, you will make a cavity like this, and for making this hollow region, यहाँ पे जैसे हम वहाँ core use करते थे ना, we use core for integrate. अगर अंदर मान लीजिए कोई आपको hollow space बनाना हो in sand casting, we use core. Okay, in like that only यहाँ पे भी आप core structure use करोगे ताकि molten metal जो है आपके जो hollow space है रिंग के वहाँ पर ना जाए. Okay, और molten metal यहाँ से आप pour करना शुरू करोगे, and it will automatically move towards the outside direction because of centrifugal force. Okay, so rim kind of thing, rim wheels and spoked wheels can be made by using semi-centrifugal casting. And why not true centrifugal casting? I explained that thing because the full hollow structure can be only produced by using true centrifugal casting. बाकी complicated step नहीं हो पाता है, इसलिए हम use करते हैं. Okay, I think these two kind of casting is clear. Now centrifuging casting. So centrifuging casting में आप ऐसा कोई component जो axisymmetric नहीं है उसको ही बना सकते हो. Okay, so when casting shapes are not axisymmetric, then we use this kind of then we use centrifuging casting method. Okay,
So in this you can make a number of small jobs in a single cast. In a single cast you can make number of small jobs. How you can make? Just see this diagram. Okay, so first of all, you see this, you want to make structures like this, and in n number by using single cast you want to make. Okay, now what we will do, you will ऐसा आपको component बनाना है, you want to make such component. Okay, so now you will make cavity like this. Okay, you पहले तो you will use a flask. Flask में आप ऐसे, अगर आपको 5 component बनाने, you want to make 5 component like this. So you will firstly you will make 5 cavities like this. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and now what we will do, you will add single center sprue. Center, this is this sprue is in vertical direction. Okay, so perpendicular to this paper. Okay, so this is your central sprue. This central sprue will be used for pouring molten metal inside each cavity. Okay, and now this each component should balance other components. तो इसको ऐसे प्लेस करना है कि कोई unbalanced force ना आए. This whole portion should be stable. Whole portion should be stable over the plate, over the table, because we are going to use a revolving table. And if that table is not stable, so the revolution will not be in proper way. जो फ्लक्चुएशन वो स्टार्ट हो जाएगा. जैसे आपने देखा होगा कोई जो रोटेट कर रही है, अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसमें एक तरीके से क्या स्टार्ट होने लगता है, the lateral motion will start होने लगता है. So we don't want any kind of lateral motion here. So to nullify lateral motion or to eliminate lateral motion, we need to have a proper balance table. तो जो भी आपको n component बनाने हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, uneven नहीं होना चाहिए. Okay, so first of all we made this kind of cavity. Okay, अब नीचे आपको देखिए hollow space चाहिए. For hollow space what you will do, आप कोर अंदर यूज करोगे. So this is core forming inside cavity लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, कोर क्या करेगा, कोर जो क्या करेगा आपका, कोर जो आपको एम्प्टी स्पेस जहाँ पे चाहिए फाइनल कास्ट में, तो वहां पर जो मोल्टेन मेटल नहीं होगा तभी आपको कैविटी मिलेगा. सो कोर विल हेल्प टू मेक कैविटी. ओके, कैविटी जैसे हमने सैंड कास्टिंग पढ़ा था कि जो आपका मोल्टेन मेटल है उसको वहां पर जाने से रोकता है कोर, और जब मोल्टेन मेटल उस जगह को नहीं फिल करेगा इट मींस देयर वुड बी कैविटी. So core forming inside the cavity is used for making this hollow kind of structure. Okay, अब आपको ये 2D डायग्राम में यहाँ पर दो ही दिख रहा है, यहाँ पर दो ही कैविटी दिख रहा है. ओके, बट अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो ऐसे 5 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है. एंड नाउ आफ्टर मेकिंग दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट वी स्टार्ट रिवॉल्विंग दिस होल टेबल along with pouring of molten metal. So pouring molten metal, we start pouring molten metal. And along with this, we also rotate this table. What will happen? Molten metal come through this sprue, central sprue, and it will fill inside every object. Which force is driving this molten metal inside each and every cavity? The centrifugal force only. Because when you start rotating this whole table, then centrifugal force will act along the radially outward direction, and it will move all molten metal in radial direction, and all cavities are situated in radial directions only. So without providing any kind of external force, any kind of external ramming force or anything, all molten metal will move towards the cavity because of centrifugal force only, and it will fill whole cavity. Okay, पांचों cavity को भर देगा. Okay, and after solidification you can remove each cavity from this. Okay, so I think this concept is clear. अगर छोटे-छोटे component इसके लिए use करते हैं, छोटे component बनाने के लिए, because if there are big components, why don't we use centrifusion casting for making big components? Because if you are going to make big components, then it would be not possible. It would not be possible to hold all big components over a single table and revolve it. Okay, without having any kind of lateral movement. तो balance वगैरह करने में problem आ सकती है. That's why this kind of casting is used for small jobs. Okay. Okay, the casting yield in this is not 100%. It is between 60 to 70%. And why the casting is yield is less?
बिकॉज ऑफ दिस स्प्रू. अब यहाँ पे हम स्प्रू यूज कर रहे हैं, एक गेटिंग एलिमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है, and because of that only your casting yield will decrease. So if a question is asked to you that name the variant of centrifugal casting in which the casting yield is minimum, then your answer should be centrifuging casting. Okay. And 100% किसमें होता है? 100% आपका होता है true centrifugal casting में. In case of semi centrifugal casting, again Pauling basin is attached here. So here 90%, approximately 90% yield efficiency can be obtained. But in case of this centrifugal casting, it is in between 60 to 70%. Why this value is less? Because of this gating element central screw. ठीक है. तो तीन चीजें हमने देखी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में. फर्स्ट इज ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, दैट इज यूज्ड फॉर एक्सिसोमेट्रिक कंपोनेंट, सिंपल एक्सिसोमेट्रिक कंपोनेंट लाइक पाइप्स हो गए, आपके गन बैरल्स हो गए, ये सब हो गए. Second type we have seen the semi-centrifugal casting, which is also used for symmetrical, axisymmetrical object, but if it is complex like rim. So in rim, what is happening? There is some hollow space and there is some filled space that cannot be made by using true centrifugal casting. That's why we use semi-centrifugal casting for that. Now the third component part is centrifuging casting, and centrifuging casting used for if a component is not axisymmetric and we want to make n number of components in a single casting process, then we use centrifuging casting. The component size should be small for centrifuging casting, and casting yield is minimum in centrifugal casting. So these are the things which you need to remember exam point of view से. Other things जो भी important था मैं यहाँ पे बता दिया हूँ. Okay, so now we have question. अब हमें क्वेश्चन देखना है. तो क्वेश्चन नंबर 23. ये 23 जो काउंट जो है, ये जब जैसे जैसे मैं लेक्चर्स लिया हूँ, हर लेक्चर में जो भी क्वेश्चन लगा हूँ उसी का काउंट है. सो टिल नाउ वी हैव सॉल्व 22 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कास्टिंग, and all those questions were asked in previous year papers. Okay, so 23rd question. In full mold casting process the pattern is made of. अभी हमने पढ़ा है full mold. तो full mold में हमने क्या बताया था? ऐसा पैटर्न यूज करते हैं which get vaporized after pouring molten metal. तो इसमें से कौन सा चीज हमने बताया था? पॉलीस्टाइरीन जो बताया था, यही हमने देखा था. ये हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए आप. ओके, सो सिंपल है इसका आंसर, ए पार्ट. I think all of you are remember that thing. I have told that thing अभी स्लाइड में पहले बताया था मैंने. Now 24th question. ये आप पढ़िए और आप इसका आंसर बताइए पहले. Which of the following casting process uses expandable pattern and, देखिए expandable pattern and expandable mold दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, तो आप कहोगे इसमें तो हमको सेल और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग दोनों आंसर सही लग रहा है, बट ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना भाई. यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंडेबल पैटर्न भी होना चाहिए, एक्सपेंडेबल मोल्ड भी होना चाहिए. व्हाट इज एक्सपेंडेबल? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडेबल पैटर्न? It means the pattern is not permanent, it is used for single time only. Expandable mold, what is expandable mold? It means the mold is used for single time only. So in cell casting we have seen we use a solid pattern for making cell. Okay, we used this kind of solid metallic pattern for making cell. So metallic pattern use हो रहा है, it means the pattern is not expandable. Okay, but mold was expandable in case of cell molding because that can be used for single time only. So option A तो हो ही नहीं सकता है. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप इसमें नहीं तो कहोगे कि दोनों आंसर सही है. दोनों आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है यहाँ पे, your pattern and your mold both should be expandable. So in cell mold casting your pattern is not expandable, only mold is expandable. But in case of investment casting we use wax pattern. ओके, और उसके ऊपर शेल बनता है. अभी ये भी आपका एक्सपेंडेबल है, ये भी एक्सपेंडेबल है, दोनों एक ही बार तो यूज होता है. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सो इफ यू सी एनी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड आफ्टर दैट ओनली you choose the right answer. Now question number 25. In hollow cylindrical parts made by centrifugal casting, the density of part is. The question, this thing I think we have discussed in previous slides. ये चीज हमने डिस्कस करा है.
सो डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? आई थिंक दिस इज एप्टीट्यूड क्वेश्चन. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो ऑब्वियसली द डेंसिटी ऑफ आउटर रीजन विल बी हाई. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. ओके, सो अभी आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं. And if you are liking all this stuff, all these video lectures, then you should share all these videos and all the playlist of mechanical engineering course among your students, so that इससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा encouragement मिलता है. हमारे जो ड्राइविंग फोर्स है हमें और ड्राइव करेगा ताकि हम और अच्छा एफर्ट करें. And if you are having any kind of doubt, any kind of query, you can put that thing in comment section. Okay, thank you all.